अब जैसे हम लोगों ने इमेज टैग, ए टैग में देखा, हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं टू डिफाइन देयर प्रॉपर्टी। अब इनपुट कई तरह के होते हैं, अब हमें उनका प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। हाँ, ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज टाइप। टाइप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, तो उसे कुछ भी एंटर कर सकते हो, कुछ भी, लाइक फ्रॉम टेक्स्ट टू सिंबल, वॉट एवर यू वांट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब यूजर को पता कैसे चलेगा व्हाट ही नीड्स टू एंटर। ओके, तो यूजर को जो हम लोग हिंट देते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। ओके, एंटर योर नेम नाउ व्हेनेवर यू, अब जैसे यूजर पेज पे आएगा उसे दिखेगा, ओके दिस इज अ फॉर्म वेयर यू हैव टू टाइप योर नेम। Okay, now user know you have to type your name. So as soon as you will start typing, that placeholder will go. Placeholder isn't a value, that is just a syntax to make available the hint. Okay. Next type is input is password. Now, अब difference क्या है text और password में? Now, if you type here anything, you can see your text. Okay. But if you type here anything, you can't. It is the star mark. Okay. Now, next thing is your input type is your submit. Now, this is a button. अगर तुम div के जगह form यूज करोगे, अब input type is a submit type, then it is a button. Okay, this will submit. Now, what I will do is, I will just make form as a div, and now if you will submit, then this won't be working. Okay, so instead of this input type submit, what we use a button actually. Okay, we won't be using input type submit anywhere. Okay, we'll be using the now. Next thing is input type. We will look for more input type. Okay, now this is an email type of input. Okay, अब email type में क्या होता है? देखो, अगर मान लो which is the type form. ओके, अब अगर यहाँ पे सबमिट करोगे ना, तो देखो एक एरर तुम्हें दिखा है, ना एरर एक्चुअली, प्लीज इंक्लूड एट इन द ईमेल एड्रेस। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने डिफाइन किया, यू हैव डिफाइंड दैट दिस इनपुट टाइप हैज टू बी ईमेल। Okay, and if it will miss an email type, you won't be able to submit, and you will be getting an error. Okay, now you do something, any sort of random type of email address. Now you can see something error. Okay, now it is a valid type of email, so you can submit it now. जैसे ये एंटर करोगे डेटा ब्लैंक हुआ क्योंकि पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, understood these three type of input fields? Is it clear? Yes or no? Yes. Okay. Next type of input is numerical input. Type number. Okay. नंबर वाले में तुम क्या है, तुम किसी भी रैंडम अल्फाबेट्स को एंटर नहीं कर सकते। इफ यू टाइप एनी अल्फाबेट इट वोंट बी अवेलेबल, ऑल यू कैन टाइप इज नंबर। बट नाउ इफ यू टाइप ई, इट इज अवेलेबल, जस्ट ई, सिंगल ई, like 2e something, this type of number is available. Can anyone explain why you can type e, not any other alphabets? Can anyone explain this? Sir, exponent. Yeah, exactly. That's an exponential value. So it will convert this exponential value to a number which will be visible to you. Now, okay. Now we are done with this. Now, another type of input is if you want to take input from user as a date. Now you want user to give calendar access, where user will click on calendar and they can choose the date. यहाँ से तुम्हें date available होगा. Okay. Now if I make it time, so user can select time from here. Okay. And next thing is input type date time. So यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हें
या डेट टाइम लुकअप। तो यहाँ पे तुम एक साथ डेट और टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो, या सेलेक्ट डेट टाइम एक साथ, but we will be using most of the time individually. Okay, taking input from user date or time individually. Okay, are these inputs, ये समझ में आया सभी को यहाँ तक? ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। Yes, sir. Okay, we will look something more different. Now, another type of input is available, color. So suppose you want to use it to select some sort of color, so you can select it. You can change the method of color. The color की methods क्या होती है? Just X, RGB, SSL. We will talk on the CSS part. So you can make available this color sort of input to the user. You can pick color from any of the pages, okay, or from anywhere else. You want to like pick. And next important thing is which we will use it is input type. This is the range type of input where you are having a slider where you can like select input from a range. But this we won't be using. The most important thing is this sort of thing. Input type file. This is important. Why? Because you know that you have to like allow user to like upload some data documents, some files. So you can make this type available. Okay, so all the files will be available to you. So type file will open the folder from where you can select files and all this stuff. Okay. Is it clear till here? All these inputs are understanding, like you are understanding or not? Is it clear to not? Yes, sir. Okay. Now, next thing is apart from these placeholders, you have seen many where like above of this field, you can see the text actually. Like enter your name, enter your first name, enter your second name. So how do those things are available? Those are available using this label. Okay. This label, okay. Suppose enter your first name. Okay. Now you can see this text is available here. Enter your first name, and then you have to enter your first name. Okay, how we can move up and down the direction wise, that is something in the CSS. Okay, if you want another text apart from this placeholder, you want to make something visible every time to the user, you can use it in the label tag. Okay, वहाँ तक सभी को clear है? Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. That's really moving ahead. Sir, sometimes there is word limit also. Yeah, word limit is set actually there. So what happens is that we will using the JavaScript. तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे तुम इस पे टाइप करना स्टार्ट करते हो ना, whenever you start typing, तो वहाँ पे एक इवेंट ट्रिगर होता है. इवेंट का मतलब जैसे कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इट विल ट्रैक योर इनपुट. Suppose you have defined in the logic that you want only 50 characters from the user. ठीक है, कि तुम्हें 50 कैरेक्टर ही लेना है. तो जैसे यूजर टाइप कर रहा है, यू आर मेकिंग अ काउंट, ओके, हाउ मेनी कैरेक्टर ही हैज टाइप. So as you will encounter, okay, it has got 50 characters, which is the limit. Then वो कितना भी टाइप करेगा, that won't be available. So वो लॉजिक हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है? Yes, sir. Okay. Now, another type of input is when you can see a checkbox type of thing where you select something. Okay.